Hello and welcome to my channel Blue Chip Finance, and this video is the extension of the previous video related to the weighted average cost of capital WACC. And in this video we are going to discuss some more questions related to this concept. So here in example number 4, which is related to cost of equity. Alternative Electric is a regulated public utility, and it is expected to provide steady growth of dividends of 8% per year for the indefinite future. Its last dividend was $15 per share. The stock sold for $80 per share just after the dividend was paid. What is the company's cost of equity? So it is not the direct question related to WACC, but in this question we only calculate the only one portion, and that is the return. So first of all, Alternative Electric is regulated public utility, and growth rate of its dividend is 8% per year for the indefinite future, and its last dividend was 15 per share. So as you are seeing here that the dividend which we are taking in this question is the last dividend, or you can say dividend at the zero time period. So dividend 1 or div 1 is always equals to div naught multiplied by 1 plus growth rate, which we already discussed in the topic of financial management, valuation of long-term securities. There we calculated lot of times about div 1. So div 1, always remember that it is equals to div naught multiplied by 1 plus growth rate divided by P naught. Whole formula is equals to this one plus G. So here, if it is given in the question that the recent or current dividend is 15, then div 1 should be equals to 15, but here it is mentioned that its last dividend was $15 per share, then div 1 will be equals to div naught multiplied by 1 plus G. तो एक इस बात को आपने माइंड में रखना है कि अगर करंट डिविडेंड जो कि आप अभी वसूल कर रहे हैं, अगर वो मेंशन किया गया है तो वो इक्वलेंट टू D1 के ही होगा। लेकिन अगर किसी जगह पे भी ये मेंशन किया गया है कि ये डिविडेंड जो है वो जो पीरियड गुजर चुका है उससे रिलेटेड है, तो फिर ये इक्वलेंट हो जाएगा डिव नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी। और बाकी कैलकुलेशन इसकी बड़ी इजी है। जो स्टॉक की जो मार्केट प्राइस है वो है 80, जो कि आपकी पी नॉट की जगह पे आ जाएगी, और ग्रोथ रेट आपका आ जाएगा 0.08। तो बड़ा इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर WACC के अगर ये गिवन ना हो तो फिर आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो कि बन जाएगा 28.25%। दूसरा इसकी एग्जांपल, एक्टिव इंडस्ट्रीज हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स, इट्स कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%, व्हाट इज इट्स WACC? So Active Industries has 3 different type of securities. One is debt, that is $40 million, and required rate of return on debt is 12%, preferred stock $60 million, and required rate of return is 13%, and common stock 80 million, and required rate of return is 12%. So as you're familiar now with the formula of WACC,
that we have to calculate the proportion of their individual investments. So first of all, in this case, you should get the total of all securities, that 40 plus 60 plus 80, that is equivalent to 180. And now just calculate the proportion. So debt proportion should be equals to 40 divided by 180, and that should be equals to 0.23. Preferred stocks proportion should be equals to 60 divided by 180 and 0.33, and common stock proportions should be equals to 80 divided by 180, that should be equals to 0.44, and sum of all these three proportions should be equals to 1. So tax rate is 40 and required rate of returns are also given here. So very simple it is to calculate that. First of all, debt proportion, which is 0.23, multiply by return on debt, that is 12%, so multiply by 0.1012, and multiply by 1 minus tax rate is 40%, so 1 minus 0.40, plus proportion of preferred stock, that is equals to 0.33, and return on preferred stock is 13%, so multiply by 0.13, plus common stock proportion is 0.44, and return on that is 12%, so 0.12, and just calculate and sum up all these calculation, and your weighted average cost of capital is 11.226% approximately. In question number 7, Bovista Airlines is proposing to go public, and you have been given the task of estimating the value of its equity. Management plans to maintain debt at 40%, or you can say that D divided by V should be equals to 0.40 of the company's present value, and you believe that at this capital structure the company's debt holders will demand a return of 8%. So debt return should be equals to 0.08, and stockholders will require 12%, so return on equity will be 0.12. The company is forecasting that next year's operating cash flow, depreciation plus profit after tax at 40% will be 78 million, and that investment expenditure will be 40 million. Thereafter, operating cash flows and investment expenditures are forecast to grow by 7% a year. So what is the total value of Bovista and what is the value of the company's equity? तो इस जगह पे डेट का तो उन्होंने बता दिया कि 40% है, बट देर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन रिलेटेड टू इक्विटीज प्रोपोर्शन. सो 1 minus 0.40 is equals to 0.60. So proportion of equity should be equals to 60%, and return is also given. So यहाँ पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, सिर्फ एक है डेट और दूसरा है इक्विटी. तो 40% डेट का प्रोपोर्शन है और इक्विटी का प्रोपोर्शन है 60%. रिटर्न ऑन डेट 8% और रिटर्न ऑन इक्विटी 12%. ये तमाम चीज़ें आपको डाटा में, क्वेश्चन के डाटा में गिवन है. ग्रोथ रेट यहाँ पे बताया गया जी 7% या 0.07, टैक्स रेट 40%, या हम क्वेश्चन में जो यूज़ करेंगे वो 0.40 है. उसके बाद जो आपका फ्री कैश फ्लो है वो है जी 78 मिलियन, एंड दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल बी 40 मिलियन. यहाँ पे एक बात को माइंड में रखें कि फ्री कैश फ्लो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से जिस वक्त हम इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं तो जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचती है उसको हम फ्री कैश फ्लो का नाम देते हैं. तो फ्री कैश फ्लो जो है वो आपके पास है 38 मिलियन. अब यहाँ पे व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ बोविस्टा. सबसे पहले तो हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कंपनीज इक्विटी. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जी WACC. तो प्रोपोर्शन ऑफ डेट इज इक्वल टू 0.40, रिटर्न ऑन डेट इज 8%, टैक्स रेट इज 40%, 1 minus 0.40,
60% proportion is related to equity and return on equity is 0.12 or 12%. So WACC should be equals to 9.12%. Free cash flow next year is 78 minus 40 million, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 38 मिलियन आपका फ्री कैश फ्लो है, और 38 मिलियन जो आपका फ्री कैश फ्लो है ये ग्रोथ रेट है इसके अंदर 7%. द टोटल वैल्यू ऑफ ये यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ बोविस्टा, तो टोटल वैल्यू इसकी आपकी बन जाएगी, इसकी जस्ट प्रेजेंट वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर लें, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट भी इन्वॉल्व है. तो ये माइंड में रखें कि यहाँ पे हमने ग्रोथ रेट को फिर मेंशन करना है. तो 38 मिलियन इसका फ्री कैश फ्लो है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, डिवाइड बाय आर माइनस जी. आर आपने ये ऊपर WACC जो कैलकुलेट किया है ये आपका रिटर्न है, और G जो है ये आपकी आ जाएगी ग्रोथ रेट. तो 0.0912 माइनस 0.07 और ये आपका बन जाएगा 1792.45 मिलियन. अब यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपनीज इक्विटी. तो कंपनी इक्विटी जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 60% कंपनी की इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है वो है 60%, और 40% प्रोपोर्शन जो है वो है आपका डेट का. तो सिंपल है कि सिंस मैनेजमेंट विल मेंटेन द कंपनीज डेट एट 40% ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनीज इक्विटी, ये आपकी टोटल वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, इसका 60% ले लें तो ये आपकी कंपनी की इक्विटी का प्रोपोर्शन है इन अमाउंट 107.75.47. उसके बाद ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि इसी के अंदर डाटा जो आपकी बुक से लिया गया है उससे मुतल्लिक हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, और इन दो क्वेश्चंस जो पीछे हमने देखे हैं इन्हीं को सामने रखें और इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करें. इसी तरह एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 लिया गया है यहाँ पे, और ये भी आपकी जो एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस हुई है उससे रिलेटेड है, और ये भी आपकी बुक से लिया गया है, ब्रेले मायर्स एंड रोज की फंडामेंटल्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो इन तीनों को सॉल्व करने की कोशिश करें. थैंक यू.